कौन से नाम एसोसिएटेड Maslow and Rogers. रॉजर्स के काम में सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट अनकंडीशनल पॉजिटिव ओके और Self. सेल्फ और एम्पैथी क्रिएटिविटी का स्कोप कहाँ तो आता है रॉजर्स के theory में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मैस्लो में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और रॉजर्स में अनकंडीशनल पॉजिटिव वो तो जरूरी है क्रिएटिविटी के जो हम कल कर रहे थे प्ले लाइक सिचुएशन होना चाहिए प्रेशर्स नहीं Ideal self. Ideal self. या आपका जो सेल्फ रियलाइजेशन है दैट इज टू नो योरसेल्फ सेल्फ अवेयरनेस एंड ऑल दैट का ठीक है सो वी नो दैट इन रॉजर्स थ्योरी सेल्फ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड इन दिस थ्योरी वी टॉक अबाउट रॉजर्स ऐसे जो वर्णन में रॉजर्स का चैप्टर दिया है वो करेंगे आप ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल के जो नोट्स दिए थे मैंने ठीक है उसमें रॉजर्स वाला पढ़ेंगे एंड उसमें रॉजर्स सेज दैट देयर इज बोथ अ सोशल एंड एन इंडिविजुअल नीड टू बी क्रिएटेड एंड ही सेज दैट जनरली व्हाट हैपेंस इज दैट it is a demand of the society on an individual to always conform to the social norms or to the way the things are happening around us, and we are always taught to do that in form of our socialization. But then on the other hand, when you feel that change is happening in the society, technological changes are happening and otherwise also things around you keep on changing, then it is important, equally important for you to actually keep on adapting to the changes and to keep abreast with the changes. Now, in order to keep pace with the change that is happening around you and in order to adapt to this change that is happening around you, it is always pertinent that you be constructive and creative to keep pace with whatever is happening around you. So it is important for an individual to imagine constantly, to imagine, to construct and to evolve. And this is what is he calls that as creativity. Okay? That's a social need. And based on this, he says that there are certain elements of creativity which are essential part of the process of creativity. And he says that any kind of creativity should be observable. It must be observable. Now here he says that fantasies are also novel. They are new. They are creative. But since they are not observable, so they might not be acknowledged as creative. And hence, to be acknowledged as creative, your creativity should be observable in some form. Maybe you symbolically code it in some form as a piece of art, or maybe in words, as what a creative writer does. So किसी ना किसी concrete form में वो concrete नहीं तो चाहे musical tone हो, पर observable होना चाहिए creativity. That's one. The second thing he says is that since creativity is something unique, it has to be a novel construction. जब हम कहते हैं कि creativity कुछ नया है, now here he goes a step further. He says that novelty not only in terms of the elements or the components that we have utilized, but novelty also in terms of the individual's effort that has been put on that element. कि सिर्फ शब्द क्रिएटिव नहीं होते हैं, लैंग्वेज क्रिएटिव नहीं होती है, लेकिन उन शब्दों और लैंग्वेज पे से आप क्या बना देते हैं वो क्रिएटिव, ठीक है? So basically he says that what is important is that the material is new, but the stamp of the individual on that material. And so basically creativity is the interaction of the material with the newness of an individual stamp. Okay? So what you do to a material is what is creative. I hope it's okay. Okay. The third thing he says that creativity can be intangible also. He said it is observable, but it is not essential that it is tangible and concrete. It can be intangible also. Like a piece of art or a musical tone or a symphony or a new relationship or a new dimension of your personality while in a therapeutic session. All that is creative. Okay? So anything can be creative. Now here he further goes on to define creativity. Rogers defines creativity. It is the emergence in action
of a novel relational product. Emergence in action of a novel relational product. Growing out of the uniqueness of the individual on one hand, growing out of the uniqueness of an individual on one hand, and the materials, events, people, and the materials, events, people, or circumstances of life on the other hand. I'll repeat, it is the emergence in action of a novel relational product, growing out of the uniqueness of an individual on one hand, and the materials, events, people, or circumstances of life on the other. So whatever, it can be a material, it can be a circumstance of life, it can be, certain people. So इनके साथ जो आपका एक unique interaction है, that is what is created. ठीक है? तो अगर किसी मटेरियल या प्रोडक्ट पे आप यूनिकनेस दिखा रहे हो तो एक क्रिएटिव पीस ऑफ आर्ट बन जाएगा. अगर किसी पर्सन के प्रति आप कुछ क्रिएटिव अपना इंटरेक्शन दिखा रहे हैं तो एक इंटरपर्सनल क्रिएटिव रिलेशनशिप बन जाएगा. और अगर आप किसी सर्कमस्टेंस ऑफ लाइफ की तरफ दिखा रहे हैं तो इट कैन बी अ न्यू पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ ड्यूरिंग साइकोथेरेपी. So anything can be creative. Now when he tries to define creativity, equally important in this definition is a list of things that he deliberately excludes from this definition. What he thinks creativity is not. ठीक है? क्या नहीं है creativity, वो equally emphasis से बताते हैं. And the first thing he says is that this definition has no mention of good or bad creativity. Which means that creativity ही है, चाहे आप उसको अच्छे उसमें देखें चाहे बुरे में. Like for example, if you have invented a pain relieving medicine which is something unique, which is cure, gives cure to a lot of pain of people, that is a positive way, constructive way. But then devising new ways of execution, कैपिटल पनिशमेंट देने के जो नए तरीके हैं वो भी क्रिएटिव है ना. पहले तो फांसी लगाते थे या कलम कर देते थे गला, वो बहुत वो है, अच्छा नहीं है. लेकिन अगर आज की डेट में आप एक इंजेक्शन देते और बंदा गया आपको तो कहानी, नो पेन नथिंग. इलेक्ट्रिक चेयर्स होती थी पहले एग्जीक्यूशन की. सो दीज आर ऑल क्रिएटिव थिंग्स इफ यू थिंक, बट दे आर नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी. या डिवाइजिंग एटॉमिक बॉम्ब इज क्रिएटिव, इजंट इट? कुछ भी डिस्ट्रक्शन का जो है वो भी क्रिएटिव है. लेकिन इसीलिए इस डेफिनेशन में उन्होंने गुड और बैड क्रिएटिविटी को कोई तरह से डिस्टिंग्विश नहीं किया. एंड ही सेज दैट बोथ आर इम्पॉर्टेंट, बट व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज द सोशल वैल्यू ऑफ दैट क्रिएटिव थिंग. नेचुरली इसीलिए हम इंडल्ज करते हैं या इंक्लूड करते हैं क्रिएटिविटी में कंस्ट्रक्टिव चीजें रादर दैन डिस्ट्रक्टिव चीजें. ठीक है? The second thing he says is that creativity must be socially acceptable, otherwise it will not be noticeable. Like for example, when Galileo had, for the first time said Earth is round, people took it as a blasphemy. उसको बहुत ridicule और उसको उसके अगेंस्ट खड़े हुए, तो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं था. लेकिन he further says that many creative works may not be noticeable, but they are still creative. जरूरी नहीं है कि हर चीज noticeable हो. The third thing he says is that this definition does not talk about the degree of creativity. Creativity में कोई intensity नहीं है. एक छोटी सी छोटी चीज भी क्रिएटिव हो सकती है और एक बड़ी सी बड़ी चीज भी क्रिएटिव हो सकती है. Like he says that Einstein's theory is creative, no doubt, but a child's play is equally creative. ठीक है? तो उसमें कोई इंटेंसिटी का वो नहीं है इशू. आइए और इसमें टाइम क्या होता है तुम्हारी क्लास
रात का तुम 10 बजे भी सारे लेट आते हो, 9 बजे भी लेट आते हो, 11 बजे भी लेट आते हो। श्रुति मैम की भी प्रीमियर यही अंडरलाइन क्रिएटिविटी. He says that since man is a is a person who has an inherent tendency to self-actualize. Self-actualization is your urge to expand, to actually extend, to develop and to mature whatever you already have. So आपके जो actual capacities हैं उनको completely अपने potential को explore और exploit करना self-actualization है. So there is an inherent need in every individual to actually indulge into self-actualization. That is creative. अपने आप को पूरा जो हम सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, और इसके अलावा हमारे एक अंडरलाइंग सोशल मोटिव भी होता है टू बी कंस्ट्रक्टिव, टू बी एक्सेप्टेबल and in fact not indulge into efforts which are not socially acceptable, like robbing या destructive जितनी भी activities हैं वो एक social pressure है, not to indulge in that. And he further says that generally your individual motive is considered to be more important than the social motive. Most of the times we indulge into something creative which we maybe later on realize that it is not socially acceptable. Are we familiar with M.F. Hussein's paintings? You know who Yes, ma'am. Yes, ma'am. He's no more. And बहुत famous है, worldwide famous है. लेकिन ये भी एक and whatever they have brought out according to them was also based on a social need to create awareness. Satanic Verses by Salman Rushdie was something like that, ना? So एक individual आपकी motive है, underlying need है अपने आप को express करने की, और एक social pressure है to conform. और हमेशा ये देखा जाता है कि आपकी individual need takes a primary seat and the social need takes a back seat. वो बाद में अगर आप social wrath जब face करते हैं, उससे पहले आप creativity में indulge कर चुके होते हैं, ठीक है? So your individual motive always takes precedence over your social motive. Now he says that once an individual tries to be creative, it is very essential that there are certain elements or individual conditions which are essential for creativity. The first one is openness to experience, which is the personality trait, or he calls it as extensionality versus psychological defensiveness. Openness to experience, that is extensionality versus psychological defensiveness. Now an individual who is open to all his experiences would be most creative. Whereas individuals who are open to some experiences and not to some, that would maybe, that person can also be creative, but it will be a lopsided creativity. ठीक है? जो हम जैसे destructive creativity की बात कर रहे हैं, अगर जो कि socially acceptable नहीं है, या जैसे हम कह रहे ways of execution, या कोई ऐसा atomic bomb या some warfare के ऐसे killing के तरीके आप अगर devise कर रहे हैं, so कहीं ना कहीं आप एक aspect को, the destruction that you will cause or the pain you will cause to people, उसको close down कर रहे हैं, and you're not paying attention to that aspect or that experience, which is very much a part of your real experience. Okay? So that kind of lopsided creativity, Roger says, would always be destructive. So for a true constructive creative endeavor, it is important that the individual is open to all experiences and has a trait of extensionality. Hanji, boliye. Ma'am, open to. The second element that is important is that there should be intrinsic motivation, which means that no criticism or no praise of others will be of importance to you. But what is important is your own opinion about your creativity. आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? That is intrinsically motivated. But on the other hand, Rogers also clarifies that it just does not mean at all that you are oblivious to the social input or others' praise.
ऐसा भी नहीं है कि आपको वो चाहिए ही नहीं. ठीक. The third thing he says is that creativity का element है that there should be an ability to toy with elements and concepts. That is to play with elements and concepts. Should be an ability to toy with. So if you are able to play with new concepts or different concepts, unrelated elements, and you are also able to juggle the elements of a situation, then you will be more creative. Which also means that you are not bound by mental sets. Mental sets, you understand? Functional fixatedness. Yes. जो आप best out of waste करते हो, करते थे स्कूल में? Yes. Yes, ma'am. कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ और फंक्शन था, लेकिन उसमें से कुछ ऐसा नया बना देना जो कि कोई सोच ही नहीं सकता. ठीक है, उसके उस फंक्शन से हटाकर उसको किसी और चीज के लिए, और वो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट ज्यादा प्राइस विनिंग होता था जिसकी नए रूप में भी कोई यूटिलिटी हो, एक्सेप्ट फॉर जस्ट डेकोरेशन पीस. नो डाउट मोस्टली हम लोग डेकोरेशन पीसेस में कन्वर्ट कर देते हो. दैट्स व्हाट नेचर हैज डन. रॉक गार्डन, Yes, ma'am. isn't it? But then ऐसा कुछ बना लेना जो सिर्फ अलग ही ना हो लेकिन ऑफ सम यूटिलिटी भी हो, वो ज़्यादा वैल्यू रखता है. ठीक है, तो कुछ भी अनरिलेटेड चीज़ को जगल करके एलिमेंट्स को अलग एक रूप दे देना और उसको मेंटल सेट्स में ना बाउंड होना, दैट इज क्रिएटिव. ठीक है. नाउ बिसाइड्स दीज थ्री कंडीशंस which he says are essential for creativity, Rogers also talks about certain add-ons, or he calls them as concomitants. CONCOMITANTS. The first is that there should be an aesthetic quality which depends on the selectivity of the piece of art. Aesthetic, ES, aesthetic quality which depends on the selectivity of the piece of art, or the success in bringing out the essence of the whole thing. Bringing out the essence of the whole thing. Now, at times there can be, we talked about tolerance for ambiguity, which is essential. Now, along with that tolerance for ambiguity to handle chaos, जो कल हम बात कर रहे थे, it is equally important to sieve out relevant and make sense or comprehensive sense out of that irrelevant. ठीक है, उसमें से सब में से कुछ ऐसा निकाल लेना जो कि उसका essence हो. That is creative. And that is something which is not only understood by you but also understood by others and gives pleasure to you and to others. That is creative. Okay? So that is where you talk about that aha moment or that eureka feeling that yes, this is what it meant. जो तुम caption contest करते हो, वही करते हो ना pictures पे या stories पे, या आप कुछ किसी उसमें भी तो आता है, newspaper में भी आता है ना caption contest. करा है कभी, देखा है newspaper पढ़ते हैं. Review. The second is anxiety of separatedness. Now, whenever you are indulging into something unique, something original, something creative, that means that you are treading a path which nobody else has done as yet. ऐसा कुछ अलग आप कर रहे हैं जो किसी ने कभी नहीं किया, और naturally अगर आप ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जिस पर अभी तक कोई नहीं चला, that means आप अकेले चल रहे हैं. ठीक है, and that also brings along a feeling of being detached from the rest. Yes. Alone होना और एक separatedness होना. That separatedness or being alone on that path also gives you a sense of anxiety. ठीक है, जो सबने किया वो तो मुझे भी पता है, वो भी मैं कर लूँगी, वहाँ मुझे एंजाइटी इतना नहीं होगा. लेकिन ऐसे रास्ते पे चलना जो कभी किसी ने नहीं किया और मैं उसमें endeavor कर रही हूँ, that no doubt motivates me.
that propels me, but that also brings along a sense of anxiety. And that is why they say that there is a need to, the fourth point, need to communicate. हम में से कितने लोग डेली जर्नल लिखते हो, डायरी लिखते हो कभी? Yes, ma'am. दो, 3, 4, 5 रोज लिखते हैं? एवरी डे? या किसी दिन कुछ खास अच्छा या बुरा हो जाए उस दिन? He says there are certain circumstantial or environmental elements that are important for creativity. Conditions that are important for creativity. इसमें he says that creativity will only flourish when the environment is not enforcing. There is no force in the environment. जो हमने कल किया game-like condition. That means there should be an assurance in the environment for both psychological safety and freedom. Now when you talk about safety, मतलब इंसान को सेफ लगना चाहिए उस एनवायरनमेंट में, मैं कुछ भी कचड़ पचड़ बना लूँ, लेकिन वही यही तो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है ना? Yes, ma'am. ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. जब आप सेफ्टी की बात करते हैं उसमें सबसे पहली चीज आती है आपकी अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एंड अ फेथ. Now this kind of presence of an unconditional positive regard and a faith in your potential gives you a sense of safety. As a result, there is less need for rigidity. And this would lead a person to discover himself and to actualize in a new spontaneous manner. जो कि sadly हम नहीं देते. There are always conditions. ये क्या किया है? अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते. ऐसा कोई करता है? कभी देखा है किसी को ऐसे करते हुए? ये जो बस बोलना और आपने रिजिड कर दिया कॉन्सेप्ट. हाँ जी. मैम जो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है, Because if there is an external evaluation, it is generally taken as a threat, and as a result, the defenses are on. What is more important is that the locus of evaluation should lie with the individual. The individual should know his likes or dislikes, his own sense of right or wrong should be rather than what others say. But again, Roger says that this does not mean that others' reactions are not important. M.F. Hussain को तभी देश निकलना था. उसने अपने हिसाब से बनाया, लेकिन that did not mean that बाकियों के sentiments were not important. ठीक है? So that is important. But then in a non-evaluative way. Others' reactions are important, but only till they are non-evaluative. That's why I generally, जैसे मैं आपको कई बार पहले भी बात की है, normally in a therapeutic session अगर आप देखें, हो सकता है आपके क्लाइंट का बहुत concocted vision हो, negative opinion हो, तभी तो थेरेपी के लिए आया है. Yes. प्रॉब्लम तो हो रही है. हम में से कुछ लोग होते हैं जो कि जिनका विजन ही डिस्टॉर्टेड होता है, उनका कॉन्टेक्स्ट, उनका कंस्ट्रूअल, जो कैली में किया हमने, कंस्ट्रूअल ऑफ द वर्ल्ड ही अलग है. ठीक है, अब वो है अलग. आपका काम है उसको मीनिंगफुल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ दिखाना, दूसरा एक पर्सपेक्टिव दिखाना. और क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में हम बात करते हैं कि आप गाइड नहीं करते हैं, आप जजमेंट्स नहीं देते हैं, आप इम्पोज नहीं करते हैं ओपिनियन, आप सिर्फ उसको अनेबल करते हैं क्लाइंट को अपने उस गड्ढे में से बाहर निकलने के लिए. आप खींचते नहीं हैं उसको बाहर. ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में, कि आप उसको हाथ नहीं देते हैं बाहर निकालने के लिए, आप उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि वो खुद से बाहर आए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में. अदरवाइज वो सेंस ऑफ डिपेंडेंस हमेशा रहेगी और वीन ऑफ नहीं होगा थेरेपी कभी भी. ठीक है. सो इसमें जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें द मोमेंट और नॉर्मल इंटरपर्सनल उसमें भी, अभी जैसे आप एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ओपननेस टू एक्सपीरियंस क्या है, हो सकता है दूसरा पर्सपेक्टिव या दूसरे ने जो कहा है वो बिल्कुल इनकम्पैटिबल हो या आपको पसंद ना हो. तो आप अगर कहते हैं नो नो यू आर रॉन्ग, दिस इज व्हाट इज राइट,
So that would always bring in your ego and the other person's ego and will lead to conflict. The better way is that I understand what you're saying, but I still would retain my view. मुझे समझ आ रहा है जो आप कह रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन मेरा व्यू भी I love to stay on my view. Again, empathy is important in Rogers' work. An assurance that the other person can see what you feel, and only then that person is reacting. Now, if the other person's view is not considered as one-sided and imposed upon, then that would allow the other person's real self to emerge, and only then that person can be played. Okay? Now, this is safety. The second thing we talked about was freedom. दो चीजें बात की हमने. Now, when he talks about freedom, he says that there should be freedom to symbolic expression. Freedom to symbolic expression is essential for creativity, which means that there should be freedom to think, to feel, to be, to foster openness, spontaneous juggling of percepts, concepts, and meanings. But again he says, freedom zaruri hai. Freedom from all these constraints. It is important for creativity to emerge and to flourish. But this freedom should not be absolute or limitless. It always should come along with a sense of responsibility. So you may enjoy a freedom to symbolize, but not a freedom to actually, make it happen in reality. कल जो प्ले था आपका साइकोड्रामा का देखा था और कोई याद था? Creativity comes along with a sense of responsibility, and this freedom is not aimless or absolute. Now, last में Maslow comes in और his take on creativity a little bit. Maslow की theory में self-actualizing is being creative. So self-actualizing your own potential, becoming everything that you are capable of becoming. What Maslow says is that what a man can be, he must be. That is creativity. So, which means that you have to do away with all the how-to-do instructions in bringing up a child, in enculturation of a child, in school, and provide an unconditional positive regard and an environment which ensures freedom and safety. Only then creativity will be, and only then self-actualization possible. With this I finish with the humanistic theory. ठीक है? Different है? Familiar है? लेकिन